Now, next topic is transportation of substances in plants. Like animals, plants also need to transport water, minerals, salts and nutrients to all their parts. Plants भी transport करते हैं ये सब, like water, minerals, salts and nutrients. Once the water and minerals are absorbed from the soil by the roots, they move up the stem and leaves through tube-like tissues called the xylem. एक बार water और minerals absorb हो जाएं from the soil, किससे? roots से, तो वो क्या करते हैं? वो stem के ऊपर चले जाते हैं और leaves में जाते हैं, किससे? through tube-like tissues. उनको हम xylem बोलते हैं. ऐसे transport होता है. Absorption and transportation of water is a continuous process which occurs with the help of transpiration. Now, what is transpiration? It is the process in which plants lose water through the stomata. Transpiration एक ऐसा process है जिसमें plants अपना water lose करते हैं through stomata. This results in water loss in the cells of the leaves and creates a pressure. The pressure helps to pull the water from the roots through the xylem of the stem to reach all the way to the leaves. Now, the food manufactured in the leaves during photosynthesis reaches all parts of the plant through a process called translocation. जो food manufacture होता है leaves में during the process of photosynthesis, वो plant के हर एक part पे reach करता है through the process of translocation. This occurs through another set of tube-like tissues called the phloem. So, xylem and phloem, they are conducting tissues or vascular bundles. Now, excretory system. All living organisms produce certain waste materials which are the byproducts of various life processes that take place in the body. Waste products are often, कैसे होते हैं waste products? Toxic and hence need to be removed from the body. इसलिए वो remove होने जरूरी होते हैं. The process by which metabolic waste products are removed from the body is called excretion. ऐसी प्रोसेस जिससे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन. द ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम. Now, the excretion in animals. In unicellular organisms like amoeba, paramecium, and lower animals like hydra and sponges, waste products are excreted by the process of diffusion through their body surface. Larger animals have special organs for excretion. जो larger animals होते हैं उनके कुछ special organs होते हैं जिससे वो excrete करते हैं. Excretion in humans. The organs involved in removing waste in human beings are the skin, lungs and kidneys. ये organs involved होते हैं हमारे waste को remove करने में. Carbon dioxide and other unwanted gases inhaled through respiration are removed through the lungs, while salts and certain amounts of water are removed through the skin as sweat. जो हमारी carbon dioxide होती है या अदर कोई भी unwanted gases हैं वो हम inhale करते हैं through respiration में. कैसे remove होती हैं? Through the lungs. और जो सॉल्ट होते हैं या कुछ अमाउंट वाटर का होता है वो रिमूव होते हैं हमारी बॉडी से थ्रू द स्किन एज स्वेट. एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन containing waste in humans is carried out mainly by the urinary system, which includes the kidneys, ureters, the urinary bladder and the urethra. Human beings have one pair of bean-shaped kidneys which filter waste products from the blood and form urine. ह्यूमन बींग्स की एक पेयर होती है बीन शेप. किडनीज की शेप कैसी होती है? बीन शेप्ड, जो फिल्टर करती है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्रॉम द ब्लड और वो क्या फॉर्म होता है उससे? यूरिन. ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स. हर किडनी कंसिस्ट करती है कॉइल ट्यूब्स जिनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं. द नेफ्रॉन्स फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड. Hence, nephrons are considered the functional units of the kidney. Here is the structure of the urinary system in human beings. You can see over here. A narrow tube called ureter runs from the inner side of each kidney. The two ureters from the two kidneys are connected to a large sac called the bladder. जो हमारे two ureters हैं, जिस right ureter है और left ureter है, कहाँ से? किडनी से आ रहे हैं, दो किडनी से. कनेक्ट कहाँ हो रहे हैं? ये एक लार्ज सैक को जिसको हम क्या बोलते हैं? एक यूरिनरी ब्लैडर.
The urine passes out from the kidneys through the two ureters into the urinary bladder where it is stored. यहाँ पे ये store होता है हमारा urinary bladder में. From the bladder, the urine passes through another muscular tube called the urethra and is finally passed out through a urinary opening at the end of the urethra. यहाँ से फिर वो urine हमारा pass out होता है through the opening which is called urethra. The sphincter muscle in the urethra helps in the passing of urine. जो ये मसल होती है sphincter muscle जो urethra में होती है ये help करती है urine की pass होने में. Sometimes due to infection, genetic conditions or injury, the kidneys may stop functioning which results in the accumulation of waste substances within the body. अगर कोई infection हो जाए हमारी kidney में तो जो हमारा waste substances होते हैं वो body में इकट्ठे होने शुरू कर देते हैं और उससे हमें infection हो सकता है. This condition can be fatal. और इससे क्या हो सकता है डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. In such cases, blood is passed to an artificial kidney machine to remove waste products from the body. इस कंडीशन में हम क्या करते हैं ब्लड कैसे पास कराते हैं एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू जिससे कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएं. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डायलिसिस. किडनी ट्रांसप्लांट इज अनदर ऑप्शन टू ट्रीट अ फेल्ड किडनी. In the surgical process, the failed or diseased kidney is replaced with a healthy kidney from a donor. तो हम kidney transplant का भी use कर सकते हैं if our kidney is infected. Now, excretion in plants. Plants to excrete waste products from their body. The main waste excreted by the plants are given below. Gases. Oxygen and carbon dioxide are given out during the process of photosynthesis and respiration. Excess water. The excess water taken in through the roots is lost by the plant through the stomata by the process of transpiration. Excess salts. The excess salts obtained either from the soil or water in the ground are excreted and get deposited on plant surfaces like the leaves or the stem in the form of small crystals. अगर excess salt हो जाए from the soil or water in the ground excrete होते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे प्लांट सरफेस के ऊपर लाइक द लीव्स और द स्टेम किस फॉर्म में एक स्मॉल क्रिस्टल्स की. नाउ फोर्थ वन इज गम्स रेजिन्स एंड लेटेक्स. दीज आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस which are mainly produced when the plants get older, and these substances are of great use as adhesives, paints, varnishes and rubber. So that's all about this chapter. Thank you.